ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दार्भसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नमस्कार। नमस्कार। सुन्दरकाण्डस्य द्विषष्टितमः सर्गः। वानरैः मधुवनरक्षकाणां दधिमुखस्य च पराभवः स भृत्यस्य दधिमुखस्य सुग्रीवपार्श्वे गमनं च। Today we read chapter 62 of the Sundarakandam, which has 38 verses. Having entered Madhuvana and partaken of honey as permitted by Hanuman and singing and dancing like drunken people, the monkeys were forbidden by those guarding the grove and they belabored the latter. Repulsed by them, the guards reported the matter to their leader Dadimukha, who appeared on the scene with his entourage and on remonstrating with the monkeys was thrashed by Angada, who dashed him to the ground. The guards headed by Dadimukha then moved en masse to Kishkinda to report the matter to Sugriva and bow down at his latter's feet. आज हम सुंदर कांड के द्विशिष्टतम सर का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 38 श्लोक हैं। वानरों द्वारा मधुबन के रक्षकों और दधिमुख का पराभव तथा सेवकों सहित दधिमुख का सुग्रीव के पास जाना। तान् उवाच हरिश्रेष्ठो हनुमान् वानरऋषभः अव्यग्र मनसो यूयं मधु सेवत वानराः। उस समय वानर शिरोमणि कपिवर हनुमान ने अपने साथियों से कहा, वानरों तुम सब लोग बेखटक के मधु का पान करो, मैं तुम्हारे विरोधियों को रोकूंगा। Hanuman, the foremost of monkeys and a veritable jewel among them, spoke to them as follows. With an undisturbed mind, enjoy you the honey, O monkeys. अहम् अवर्जयिष्यामि युष्माकं परिपन्थिनः श्रुत्वा हनुमतो वाक्यं हरीणां प्रवरोऽङ्गदः। प्रति उवाच प्रसन्नात्मा पिबन्तु हरयो मधु अवश्यं कृतकार्यस्य वाक्यं हनुमतो मया। हनुमान की बात सुनकर वानर प्रवर अंगद ने भी प्रसन्नचित होकर कहा, वानरगण अपनी इच्छा के अनुसार मधुपान करो। हनुमान जी इस समय कार्य सिद्ध करके लौटे हैं, अतः इनकी बात स्वीकार करके योग्य ना हो तो भी मुझे अवश्य माननी चाहिए, फिर ऐसी बात के लिए तो कहना ही क्या। I shall ward off those who hinder you, delighted at heart to hear the exhortation of Hanuman. Angada, the most eminent of monkeys, echoed his words as follows. Let the monkeys drink honey. The direction of Hanuman, which has accomplished his errand, must be followed by me, even if it is not worth following. Much more an advice of this type, which is worth following, O dear ones. अकार्यम् अपि कर्तव्यं किमङ्गं पुनरीदृशम् अंगदस्य मुखात् श्रुत्वा वचनं वानरऋषभाः। अंगद के मुख से ऐसी बात सुनकर सभी श्रेष्ठ वानर हर्ष से खिल उठे और साधु साधु कहते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। Highly rejoiced to hear the compliment coming from the lips of Angada, the monkeys who were foremost of their class approved it, saying, Excellent, bravo. साधु साधु इति संहृष्टा वानराः प्रत्यपूजयन् पूजयित्वा अंगदं सर्वे वानरा वानरऋषभम्। वानर शिरोमणि अंगद की प्रशंसा करके वह सब वानर जहाँ मधुवन था उस मार्ग पर उसी तरह दौड़े गए और जैसे नदी के जल का वेग तटवर्ती वृक्षों की ओर जाता है। Applauding Angada, the foremost of monkeys, all the monkeys proceeded once more to the site where Madhuvan was, even as the strong current of the river would rush towards a tree standing on its banks. जग्मुः मधुवनं यत्र नदी वेग इव द्रुमं ते प्रविष्टा मधुवनं फालान् आक्रम्य शक्तितः। अतिसर्गाच्च पटवो दृष्ट्वा श्रुत्वा च मैथिलीं पपुः सर्वे मधु तदा रसवत् फलमाददुः।
मिथिलेश कुमारी सीता को हनुमान जी तो देखकर आए थे और अन्य वानरों ने उन्हीं के मुख से यह सुन लिया था कि वह लंका में आता। उन सब का उत्साह बढ़ा हुआ था। इधर युवराज अंगद का आदेश भी मिल गया था, इसलिए वह समर्थशाली सभी वानर राक्षसों पर पूरी शक्ति से आक्रमण करके मधुवन में घुस गए और वहां इच्छा अनुसार मधु पीने तथा रसीले फल खाने लगे। Having penetrated deep into Madhuvan after overpowering the guards by dint of their superior might, all the monkeys who felt exceptionally strong due to the permission granted by Angada to enjoy the produce of the grove, and because Hanuman had seen Sita, princess of Mithila, and others had heard of her being present in Lanka, drank honey on that happy occasion and gathered the delicious fruits to enjoy them. उत्पत्त्ये च ततः सर्वे वनपालान् समागतान् ते ताडयन्तः शतशः सक्ता मधुवने तदा। रोकने के लिए अपने पास आए हुए रक्षकों को वह सब वानर सैकड़ों की संख्या में जुटकर उछल उछल कर मारते थे और मधुवन के मधु पीने एवं फल खाने में लगे हुए थे। Jumping up and thrashing the guards of the grove who had come together to hinder them, all the monkeys then became engaged in hundreds in gathering the fruit, etc., in Madhuvan on that occasion. मधूनि द्रोणमात्राणि बाहुभिः परिगृह्य ते पिबन्ति कपयः केचित् संघर्षस्तत्र कृष्टवत्। इतने ही वानर झुंड के झुंड एकत्रित हो वहां अपनी भुजाओं द्वारा एक एक द्रोण मधु से भरे हुए छत्तों को पकड़ कर लेते और सहर्ष पी जाते थे। Holding with their arms honeycombs weighing a drone approximately 30 kgs each, some monkeys in that grove quaffed the honey in groups to their heart's content. घ्नन्ति स्म सहिताः सर्वे भक्षयन्ति तथा परे केचित् पीत्वा पविध्यन्ति मधूनि मधुपिङ्गलाः मधुच्छिष्टेन केचित् च जग्मुः अन्योन्यमुत्कटाः अपरे वृक्षमूलेषु शाखा गृह्य व्यवस्थिताः। मधु के समान पिंगल वर्ण वाले वे सब वानर एक साथ होकर मधु के छत्तों को पीटते, दूसरे वानर उस मधु को पीते और कितने ही पीकर बचे हुए मधु को फेंक देते। कितने ही मदमत हो एक दूसरे को मोम से मारते थे और कितने ही वानर वृक्षों के नीचे डालियां पकड़कर खड़े हो गए थे। All the monkeys who were reddish brown like honey broke the honeycombs together, while others partook of the honey contained in those combs, while still others threw away the combs after drinking the honey. Others who were intoxicated pelted one another with balls of wax, while still others stood rooted at the foot of the trees, seizing the boughs. अत्यर्थं च मदग्लानाः पर्णानि आस्तीर्यं शेरते उन्मत्तवेगाः प्लवगा मधुमत्ताश्च कृष्टवत्। इतने ही वानर मद के कारण अत्यंत ग्लानि का अनुभव कर रहे थे। उनका वेग उन्मत्त पुरुषों के समान देखा जाता था। वे मधु पी पी कर मतवाले हो गए थे, अतः बड़े हर्ष के साथ पत्ते बिछाकर सो गए। Feeling utterly languid through inebriety, monkeys who were drunk with honey and possessed the impetuosity of a madman lay down full of joy, spreading leaves on the ground. क्षिपन्त्यपि तथान्योन्यं स्खलन्ति च तथा परे केचित् स्वेढान् प्रकुर्वन्ति केचित् कूजन्ति हृष्टवत्। कोई एक दूसरे पर मधु फेंकते, कोई लड़खड़ाकर गिरते, कोई गरजते और कोई हर्ष के साथ पक्षियों की भांति कलरव करते थे। Others likewise insulted one another, while others stumbled down. Some roared like lions, while others, full of joy, whistled like birds. हरयो मधुना मत्ताः केचित् सुप्ता महीतले दृष्टाः केचित् हसन्त्यन्ये केचित् कुर्वन्ति चेतरत्। मधु से मतवाले हुए कितने ही वानर पृथ्वी पर सो गए थे। कुछ ढीठ वानर हंसते और कुछ रोदन करते थे। Drunk with honey, some monkeys lay down to repose on the earth's surface, while other impudent monkeys laughed, while still others did the reverse and wept.
कृत्वा केचित् वदन्ति अन्ये केचित् बुध्यन्ति चेतरत् ये अपि अत्र मधुपालाः स्युः प्रेष्या दधिमुखस्य तु तेऽपि तैः वानरैः भीमैः प्रतिषिद्धा दिशो गताः जानुभिश्च प्रगृष्टाश्च देवमार्गं च दर्शिताः। कुछ वानर दूसरा काम करके दूसरा बताते थे और कुछ इस बात का दूसरा ही अर्थ समझते थे। उस वन में जो दधिमुख के सेवक मधु की रक्षा में नियुक्त थे, वे भी उन भयंकर वानरों द्वारा रोके या पीटे जाने पर सभी दिशाओं में भाग गए। उनमें से कई रखवाले को अंगद के दल वालों ने जमीन पर पटक कर घुटनों से खूब रगड़ा और कितने को पैर पकड़कर आकाश में उछाल दिया था अथवा उन्हें पीठ के बल गिराकर आकाश दिखा दिया था। Having done one thing, some monkeys pretended to have done something else, while still others construed their acts in a different way. Hindered in their duty by those terrible monkeys, even the aforesaid servants of Dadimukha, who for their part guarded the honey in this grove, fled in all directions. Nay, they were dragged by their knees and further seized by their feet and were tossed up in the air. अब्रुवन् परमोद्विग्ना गत्वा दधिमुखं वचः हनुमता दत्तवरैः हतं मधुवनं बलात् वयं च जानुभिः गृष्टा देवमार्गं च दर्शिताः। वे सब सेवक अत्यंत उद्विग्न हो दधिमुख के पास जाकर बोले, प्रभु, हनुमान जी के बढ़ावा देने से उनके दल के सभी वानरों ने बलपूर्वक मधुवन का विध्वंस कर डाला। हम लोगों को गिराकर घुटनों से रगड़ा और हमें पीठ के बल पटक कर आकाश का दर्शन करा दिया। Approaching Dadimukha, greatly alarmed as they were, they submitted as follows. Madhuvana has been forcibly laid waste by the monkeys who had been granted by Hanuman the privilege to enjoy the fruits, etc. of the grove. Nay, we too were dragged by the knees and seized by the feet and tossed up in the air. हनुमता दत्तवरैः हतं मधुवनं बलात् वयं च जानुभिः गृष्टा देवमार्गं च दर्शिताः। तदा दधिमुखः क्रुद्धो वनपः तत्र वानरः हतं मधुवनं श्रुत्वा सान्त्वयामास तान् हरीन्। एता गच्छत गच्छामो वानरान् अतिदर्पितान् बलेन आवारयिष्यामि प्रभुञ्जानान् मधुत्तमम्। तब उस वन के प्रधान रक्षक दधिमुख नामक वानर मधुवन के विध्वंस का समाचार सुनकर वहां कुपित हो उठे और उन वानरों को सांत्वना देते हुए बोले, आओ आओ चलें, और इन वानरों के पास इनका घमंड बहुत बढ़ गया है। मधुवन के उत्तम मधु को लूट कर खाने वाले इन सबको मैं बलपूर्वक रोकूंगा। Incensed to hear of Madhuvana being devastated by the monkeys, Dadimukha, whose duty it was to guard the grove, consoled the reporting monkeys on that occasion as follows. Come along, come away. Let us approach the highly arrogant monkeys. I shall forcibly ward off the monkeys feasting on the excellent honey. श्रुत्वा दधिमुखस्येदं वचनं वानरऋषभाः पुनः वीरा मधुवनं तेनैव सहिता ययुः। दधिमुख का यह वचन सुनकर वे वीर कपिश्रेष्ठ पुनः उन्हीं के साथ मधुवन को गए। Hearing this assurance of Dadimukha, the aforesaid heroic jewels among monkeys retraced their steps to Madhuvana, accompanied by Dadimukha himself. मध्ये येषां दधिमुखः सुप्रगृह्य महातरुं सम् अभ्यधावन् वेगेन सर्वे ते च प्लवंगमाः। इनके बीच में खड़े हुए दधिमुख ने एक विशाल वृक्ष हाथ में लेकर बड़े वेग से हनुमान जी के दल पर धावा किया। साथ ही वे सब वानर भी उन मधु पीने वाले वानर पर टूट पड़े। Nay, and firmly seizing a huge tree, Dadimukha took up his position in their midst, and all the aforesaid monkeys ran with all speed in the directions of Madhuvana. ते शिलाः पादपां चैव पाषाणान् अपि वानराः गृहीत्वा अभ्यागमन् क्रुद्धा यत्र ते कपिकुञ्जराः।
क्रोध से भरे हुए वे वानर शिला वृक्ष और भाषण लिए उस स्थान पर आए जहां वे हनुमान आदि कपिश्रेष्ठ मधु का सेवन कर रहे थे। Seizing rocks and trees as well as slabs of stone, those monkeys arrived, full of rage, at the place where those elephants among monkeys were. बलान् निवारयन्तश्च आसेदुर् हरयो हरीन् सन्दष्टौष्टपुटाः क्रुद्धा भर्त्सयन्तो मुहुर्मुहुः। अपने होठों को दांतों में से दबाते हुए क्रोध पूर्वक बारंबार धमकाते हुए ये सब वानर उन वानरों को बलपूर्वक रोकने के लिए उनके पास आ पहुंचे। Forcibly hindering the monkeys, nay, biting their lips in rage and threatening them again and again, the monkeys came near them. अथ दृष्ट्वा दधिमुखं क्रुद्धं वानरपुङ्गवाः अभ्यधावन्त वेगेन हनुमत् प्रमुखास्तदा। दधिमुख को कुपित हुआ देख हनुमान आदि सभी श्रेष्ठ वानर उस समय बड़े वेग से उनकी ओर दौड़े। Seeing Dadimukha enraged, the aforesaid bulls among the monkeys, headed by Hanuman, forthwith ran with all speed to meet them on that occasion. सवृक्षं तं महाबाहुम् आपतन्तं महाबलं वेगवन्तं विजग्राह बाहुभ्यां कुपितो अंगदः। वृक्ष लेकर आते हुए वेगशाली महाबली महाबाहु दधिमुख को कुपित हुए अंगद ने दोनों हाथों से पकड़ लिया। Full of rage, Angada clasped tightly by his arms the mighty arm Dadimukha, who was endowed with extraordinary might and was rushing with all speed, tree in hand. मदान्धो न कृपां चक्रे आर्यको अयं ममेति सह अतैनं निष्पिपेशाशु वेगेन वसुधातले। वह मधु पीकर मदंत हो रहे थे, अतः ये मेरे नाना है ऐसा समझकर उन्होंने उन पर दया नहीं दिखाई। वे तुरंत बड़े वेग से पृथ्वी पर पटक कर उन्हें रगड़ने लगे। Blinded with intoxication, he did not show any mercy to him on the score of his being his grand uncle. Nay, causing him at once to fall down, he began to rub him against the ground with vehemence. स भग्नबाहुर्मुखो विह्वलः शोणितोक्षितः प्रमुमोह महावीरो मुहूर्तम कपिकुंजरः। उनकी भुजाएं, जांघें और मुंह सभी टूट फूट गए। वे खून से नहा गए और व्याकुल हो उठे। वे महावीर कपिकुंजर दधिमुख वहां 2 घड़ी तक मूर्छित पड़े रहे। Having completely lost control over himself, nay, bathed in blood, his arms, thighs, and face broken, that elephant among monkeys, an eminent hero, fainted away for a moment. स कथंचित् विमुक्तैः तैः वानरैः वानरऋषभः उवाच एकान्तम् आगत्य स्वान् भृत्यान् समुत्पागतान्। उन वानरों के हाथों से किसी तरह छुटकारा मिलने पर वानर श्रेष्ठ दधिमुख एकांत में आए और वहां एकत्रित हुए अपने सेवकों से बोले। Withdrawing to a secluded corner when let go of somehow by those monkeys, that jewel among monkeys spoke as follows to his subordinates who had come very near. एता गच्छत गच्छामो भर्ता नो यत्र वानरः सुग्रीवो विपुलग्रीवः सह रामेण तिष्ठति। आओ आओ अब ये वहां चले जहां हमारे स्वामी मोटी गर्दन वाले सुग्रीव श्री रामचंद्र जी के साथ विराजमान है। Come along, come away. We shall proceed to where the thick-necked monkey Sugriva, our master, is staying with Sri Rama. सर्वं चैव अंगदे दोषं श्रावयिष्याम पार्थिवे अमर्षि वचनं श्रुत्वा घातयिष्यति वानरान्। राजा के पास चलकर सारा दोष अंगद के माथे पर मढ़ देंगे। सुग्रीव बड़े क्रोधी हैं, मेरी बात सुनकर वह उन सभी वानरों को मरवा डालेंगे। Nay, we shall make known to the king all the misconduct of Angada. Full of indignation, he will cause the offending monkeys to be put to death on hearing our complaint. इष्टं मधुवनं हि एतत् सुग्रीवस्य महात्मनः पितृपैतामहं दिव्यं देवैः अपि दुरासदम्।
महात्मा सुग्रीव को ये मधुवन बहुत प्रिय है। वह उनके बाप दादाओं का दिव्य वन है। इसमें प्रवेश करना देवताओं के लिए भी कठिन है। For this wonderful Madhuvana, which has been inherited by him from his forefathers and is difficult to approach even for the gods, is dear to the high-souled Sugriva. स वानरान् इमान् सर्वान् मधुलुब्धान् गतायुषः घातयिष्यति दण्डेन सुग्रीवः स सुहृज्जनान्। मधु के लोभी इन सभी वानरों की आयु समाप्त हो चली। सुग्रीव इन्हें कठोर दंड देकर इनके सुहृदय सहित इन सब को मरवा डालेंगे। The celebrated Sugriva will cause to be killed by way of punishment all these monkeys avid for honey, whose sands of life have already run out, along with their near and dear ones. बद्ध्या हि एते दुरात्मानो नृपाज्ञा परिपन्थिनः अमर्ष प्रभवो रोषः सफलो मे भविष्यति। राजा की आज्ञा उल्लंघन करने वाले ये दुरात्मा राजद्रोही वानर वध के ही योग्य है। इनका वध होने पर ही मेरा अमर्ष जनित रोष सफल होगा। Though these evil-minded monkeys deserve to be killed because they had flouted the royal command, born of indignation, my wrath will bear fruit only then. एवमुक्त्वा दधिमुखो वनपालान् महाबलः जगाम सहसोत्पत्य वनपालैः समन्वितः। वन के रक्षकों से ऐसा कहकर उन्हें साथ ही ले महाबली दधिमुख सहसा उछलकर आकाश मार्ग से चले। Having spoken as aforesaid to the guards of the grove and springing up all at once, Dadimukha, who was endowed with extraordinary might, departed for Kishkinda, duly accompanied by the guards of the grove. निमेषान्तरमात्रेण स हि प्राप्तो वनालयः सहस्रांशुः सुतो धीमान् सुग्रीवो यत्र वानरः। और पलक मारते मारते वे सब स्थान पर जा पहुंचे जहां बुद्धिमान सूर्यपुत्र वानरराज सुग्रीव विराजमान थे। In the mere twinkling of an eye, the aforesaid monkey already reached the place where the sagacious monkey Sugriva, son of the sun god, was. रामं च लक्ष्मणं चैव दृष्ट्वा सुग्रीवमेव च समप्रतिष्ठां जगतीम् आकाशात् निपपातः। श्री राम लक्ष्मण और सुग्रीव को दूर से ही देखकर वे आकाश से समतल भूमि पर कूद पड़े। Beholding from a distance Sri Rama and Lakshmana too, as well as Sugriva, he descended to a level ground from the airspace, so the tradition goes. स निपत्य महावीरः सर्वैः तैः परिवारितः हरिः दधिमुखः पालैः पालानां परमेश्वरः स दीनवदनो भूत्वा कृत्वा शिरसि स अंजलिं सुग्रीवस्य अशुतौ मूर्ध्ना चरणौ प्रत्यपीडयत्। वानर राक्षसों के स्वामी महावीर वानर दधिमुख पृथ्वी पर उतरकर उन रक्षकों से घिरे हुए उदास मुख किए सुग्रीव के पास गए और सिर पर अंजलि बांधे उनके चरणों में मस्तक झुकाकर उन्होंने प्रणाम किया। Coming down, surrounded by all the aforesaid guards, nay, wearing a miserable aspect and placing his joint palms over his head, that monkey, Dadimukha, the paramount leader of those guards, who was a great hero, forthwith pressed the well-known feet of Sugriva with his head. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुंदरकांडे 62तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 62वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 62 of the Sundarakandam in the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Ramanama Varanane Om Apadamapahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. धन्यवाद। धन्यवाद।